Okay students, let us start with a new chapter, that is design of spur gear, right? Before starting the chapter, I assume that you are very well known to some of the basic concepts of spur gear, right now, like say law of gearing, right now, the law of gearing. Then we are known with velocity ratio, gear ratios, some terminologies of gears and the types of gears, then the phenomena of interference and undercutting, then backlash, right now all these are the terms related to gears. So हम अज्यूम करेंगे कि ये सब बेसिक्स आपने पार्ट 1 में कवर किया, राइट ना, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स पार्ट 1 में, राइट? एंड if those basics are very much clear, then we can move for the design of the spur gear, right? Now जब भी हम डिजाइन ऑफ स्पर गियर के बारे में सोचेंगे, we will design a spur gear for two cases, that is for bending strength and for wear strength, right now. Any spur gear will be designed for a bending strength and for wear strength, right? Now टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट बेंडिंग स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ का जो भी कंसेप्ट है वो हम आगे कवर करेंगे, फिलहाल तो बेंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में कंसिडर करेंगे, राइट ना. नाउ द डिजाइन ऑफ ए स्पर गियर, व्हेन वी आर डिजाइनिंग इट फॉर अ बेंडिंग स्ट्रेंथ, विल ऑलवेज यूज अ लेविस इक्वेशन, राइट ना. एनी स्पर गियर, सिंस अ स्पर गियर के ऊपर जो भी लोड आने वाला है, दैट विल बी समथिंग ऑफ बेंडिंग लोड, राइट ना. सपोज हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक टूथ है, से दिस इज योर टूथ, इट इज मेशिंग विथ सम अनदर टूथ. इन दैट केस अगर मैं कंसिडर करूं कि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इट विल एक्सर्ट सम फोर्स. दिस फोर्स से Wn is the normal force which is being applied on the tooth. Now when I am saying that some normal force is being applied on the tooth, इसका मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे जो इस टीथ के ऊपर एक्ट करेंगे, राइट? दोज कंपोनेंट्स विल बी Wt, that is in tangential direction, and Wr, that is in radial direction. Now अगर Wn normal force है which is being exerted on the single tooth, in that case जो दोनों भी फोर्सेस उसे रिजॉल्व करने के बाद हमें एक टेंजेंशियल फोर्स और एक रेडियल फोर्स मिलता है, तो ऑफ कोर्स टेंजेंशियल एंड रेडियल फोर्सेस विल इंड्यूस सम सम स्ट्रेस, राइट? नाउ ऑब्वियसली द Wr, that is the radial force, will induce radial stress, and the magnitude of radial stress is very small, and if it is small, it is always neglected. So Wt is the only force which is inducing some strength, and the strength induced by this Wt is nothing but bending stress. अगर Wt अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है तो जो टीथ है वो टीथ बेंड होने की कोशिश करेगा, मतलब कि हम डिजाइन किसके लिए करेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, से सिग्मा बी, राइट? और इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि इट इज नथिंग बट अ बीम, राइट ना. जो भी टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर मैं कहूं कि ये जो सिंगल टूथ है वो एक बीम है जिसके ऊपर Wt अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये Wt विल बी इंड्यूसिंग सम बेंडिंग स्ट्रेस से सिग्मा बी, एंड इट इज डिजाइन फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ यूजिंग लेविस इक्वेशन, राइट? नाउ before deriving that Levis equation or finding out an expression for bending strength of a tooth, let us have some assumptions. Levis utilize some assumptions for deriving an expression for bending strength, right? So let us see those assumptions, right? Okay, now the very first assumption was that the teeth is considered, or the tooth, since we are designing for a single tooth, the tooth is considered as a cantilever beam, right now. Since we say that say this is your tooth and some tangential force is acting or normal force is acting, it is being fixed somewhere here on the pitch circle. That means
it can be assumed as a sort of cantilever type of tooth, right now, somewhat this type of tooth fixed somewhere here, right, and some tangential load WL is acting over here. So a tooth is always considered as a cantilever beam, will be your first assumption. Now the second assumption is, we have said that there will be some tangential load and some radial load, right, and it may be the case that वहाँ पर shear भी develop हो, right ना. So the direct shear that is tau and the radial stress is neglected. Right? This will be your second assumption, that is the effect due to the radial load WR will be always neglected, and the shear stress which may be getting produced is also neglected. The third assumption is the gear tooth is prismatic. Right? Prismatic means it is having same geometrical shape throughout, right? So we can say that this is your gear tooth, right, having some face width, say the face width is B, right. So this is one of your assumptions. The very fourth assumption is the errors in tooth manufacturing is neglected, or we are considering that there is no error in the tooth, right, then the deflection is also neglected. Deflection is neglected, and the last assumption is the contact ratio is assumed to be 1, right now. We have this much sort of assumptions while deriving the Lewis equation. The Lewis equation is derived for finding the bending strength of the tooth, right now. So the assumptions are the tooth is considered as a cantilever beam. The tooth will be a pure cantilever beam where some load which is perpendicular to the axis of the beam will be acting. The direct shear stress, that is tau, and radial stress, say that radial stress is sigma, is neglected, and this radial stress will be produced by the radial load, right now. If I say that some amount of radial load is acting, then that radial load, the load due to the stress due to that radial load will be neglected. The gear tooth is purely prismatic one. Errors during the manufacturing are neglected, deflection is neglected, and the contact ratio is considered as 1, right. Now when we talk about the beam strength, then let us consider the tooth, और अगर हम टूथ को कंसिडर कर रहे हैं तो लेट अस से दैट दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द टूथ टी, राइट ना. तो ये जो इतना पोर्शन है दैट इज थिकनेस, एंड से ओके so let us assume that some normal force was acting, say that normal force Wn, it has been resolved into two components, that is Wt tangential load and Wr the radial load. The stress due to radial load is purely neglected, so only the bending stresses which are produced by the tangential load is considered, right. Now it has been assumed that the maximum bending stress जो भी इस टूथ प्रोफाइल में प्रोड्यूस हो रहा है, that maximum stress is between
दिस एरिया ओनली, राइट ना. WT जो भी बेंडिंग स्ट्रेसेस क्रिएट कर रहा है, दैट बेंडिंग स्ट्रेसेस इज मैक्सिमम इन दिस रीजन, that is this parabolic region, right? Let us have this name as point A, point B and point C, where length BC is your thickness. Let the length of the parabola be the height, right? We have B etc, right? Okay, since WR, the effect of WR is neglected or it is very nominal, that direct bending stress is, direct radial stress is neglected or is equal to 0. The only stress will be produced due to WT, and that stress is bending stress. And we know that flexural formula says that फ्लेक्सरल फॉर्मूला क्या कहता है हमें, M/I equals to sigma by y, right ना. M/I, that is bending moment upon moment of inertia should be equal to stress upon y, that is the distance from the neural axis, right? So can I say that this sigma c is nothing but the working stress, right na, sigma w. So it can be assumed as sigma w, that is the working stress. M/I equals to sigma w upon y, where let us write all the notations, where M is bending stress, please. Okay, M is your bending stress, and the bending stress will be equal to, since WT into the maximum bending stress will be at BC, right? So can I say that the maximum bending stress is at this point, that is BC, will be equal to WT into this distance, and since this distance is h, so I can say that M is equal to WT into h, that is maximum bending stress here will be equal to WT, that is tangential load, into the distance from the point of maximum stress, that is h, right, or L. Okay, I is your moment of inertia, and it will be equal to BT cube by 12 along the center line of parabola, right na. The I will be moment of inertia, and it will be equal to BT cube by 12 along the center line of the parabola. We have y is nothing but distance from the neural axis, right na. And can I say that it is equal to, y is say distance from the neural axis, that is half of the thickness of the tooth at the critical section, half of thickness of tooth at critical section, and I can say that y is nothing but t by 2, right na. The value of y will be t by 2, and okay, here B is nothing but your width or face width, of gear, right? Okay, now since we have all the values, if we substitute these values in the expression, can I say that sigma w will be equal to m into y upon I, will be equal to, now m is nothing but wt into h, right ना. ये बात हमने इसके पहले समझ लिया था कि wt into h is your maximum bending stress
at the most critical point, that is at BC, into y is your t by 2 upon I was bt cube by 12. If we solve it, 2 1s are 2, 6 are t will get cancel, so I get sigma w equals to wt into h, w2 into h, and of course 6 will come in numerator, 6 into wt into h upon bt square. Now can I say that finally wt will be equal to wt, that is the maximum tangential load, wt will be equal to sigma w into bt square upon 6h, right? So wt, that is tangential load, is equal to sigma w into b into t square upon 6h, right? Now in this expression, इस एक्सप्रेशन में t एंड h ऐसे वेरिएबल्स हैं जो टूथ के प्रोफाइल के ऊपर और सर्कुलर पिच पीसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट ना? कैन आई से दैट इन दिस एक्सप्रेशन t and h depend on size of tooth and circular pitch PC. तो क्या मैं कह सकता हूं कि t इज इक्वल टू सम फैक्टर x टाइम्स PC, राइट ना? अगर टूथ थिकनेस PC के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो t इज नथिंग बट x टाइम्स PC, और ये भी तो कह सकता हूं कि x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू t अपॉन PC, राइट? और similarly the h, that is height of the tooth, is also dependent on circular pitch, so I can say that h is also equal to k into PC. h is k times PC. K and x are just some factors, right? So I can say that k is equal to h upon PC, both things, right? Now अगर इन दोनों बातों को हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें, राइट? विच एक्सप्रेशन? जो हमने फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है. ओके, फाइनल एक्सप्रेशन क्या है हमारा? wt इज इक्वल टू सिग्मा w, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस इंटू फेस विड्थ इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6h इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि जो t है दैट इज फैक्टर ऑफ सर्कुलर पिच PC, तो टी स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर इंटू PC, राइट ना? सिग्मा w इंटू बी इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू इज x इंटू PC, तो टी स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर इंटू PC का स्क्वायर, राइट? अपॉन 6 इंटू h, एंड h इज नथिंग बट k इंटू PC, h इज k इंटू PC, राइट? ओके, व्हेन वी सॉल्व इट PC और PC कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है wt इज इक्वल टू सिग्मा w इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू PC अपॉन 6k, राइट? नाउ wt हमारे पास इतना रहता है. नाउ अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ck, है ना? x एक फैक्टर है, k एक फैक्टर है और 6 तो कांस्टेंट है, तो अगर इसे मैं कुछ और नाम देता हूं, लेट दिस फैक्टर्स दिस होल एक्सप्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 6k इक्वल्स टू समथिंग y, तो कैन आई से दैट wt इज इक्वल टू सिग्मा w इंटू b इंटू PC इंटू y, राइट ना? सिग्मा wt इक्वल्स टू दैट इज tangential load or the bending load is equal to sigma w, that is working stress into face width into circular pitch into y, where y is equal to x square upon 6k, and this y is known as Levy's factor, right? This y is known as Levy's factor, or it is also called as
tooth factor, right? So W is Lewis factor or tooth factor. Now, okay, now since we have y is equal to x square upon 6k, right now y is equal to x square upon 6k, और हमने अभी यहाँ कहा था कि जो x है that is equal to t upon pc and जो k है that is equal to h upon pc, right? x is equal to t x is equal to t upon pc and k equals to h upon pc, right? Now since they are factors of circular pitch, so if y, right ना, हमने y जो है लेविस फैक्टर, y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 6k, तो अगर y एक्स स्क्वायर अपॉन 6k है तो x तो हमें मालूम है t अपॉन pc है, तो कहना है से दैट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट t स्क्वायर अपॉन pc स्क्वायर अपॉन 6 इंटू k इज नथिंग बट h अपॉन pc, राइट ना? तो एक pc और एक pc यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y is equal to t square upon 6 into h into pc, right? y is equal to t square upon 6 into h into pc, and this is your value of Lewis factor W, right? Now this y is the value of y, Lewis factor that depends, right ना? अगर हम कहें कि ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा लेविस एक्सप्रेशन है, तो y की जो वैल्यू है दैट कैन बी फाउंड बाय वेरियस इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द टूथ, राइट? सो लेट अस सी व्हाट दोज वैल्यूज आर. द वैल्यू ऑफ y depends on number of teeth. So y will be equal to, let us have this expression, okay, the Lewis form factor y will be equal to 0.124 minus of 0.684 upon t, 0.684 upon t, where t is number of tooth, where t is number of teeth, and this expression will be used for 14.5 degree full depth teeth, right? And if it changes, the value of y will be equal to 0.154 minus of 0.912 upon number of teeth for 20 degree full depth teeth, for 20 degree full depth teeth, and the value of y will be again 0.175 minus of 0.841 upon t for 20 degree stub teeth, for 20 degree stub teeth, right? Now we are very low, we are concluding that the tangential load acting on the beam, that is the beam strength, will be given as sigma w, that is working stress into the face width of the gear tooth into circular pitch into Lewis form factor, where Lewis form factor will be y is equal to this much or this much or this much depending upon the type of tooth, right? So we are concluding here. Let us see a very small concept, that is the permissible working stress for the gear teeth, right? Now this permissible working stress, it depends, the permissible working stress always depends upon the static stress, right? Now we can say that sigma w depends upon static stress
sigma 0, and this sigma 0 is a function of the material. The sigma 0 is a static stress, sigma w is working stress, that is a dynamic stress during working condition. We know that जब दो gear mesh होते हैं तो the pitch line velocity changes on the line of action, right? Now it is maximum somewhere, it is 0 at the pitch point, it is again maximum, reduces, decreases, right? So sigma w, that is working stress, is a function of static stress, and this static stress depends upon the material of the gear. Right now, static stress depends upon the material of the gear, or we can say that it is the stress at elastic limit of the material. Static stress is stress at elastic limit of material. So let us see that how sigma w, that is working stress, depends upon sigma 0, that is the static stress, right? Okay, we have seen Lewis equation. This is your Lewis equation. Lewis equation states that the bending load is equal to, the bending strength is equal to sigma w into b into pc into y, where sigma w is working stress, b is the face width of the gear tooth, pc is circular pitch of the gear tooth, and y is the Lewis form factor or the टूथ फैक्टर, जिसके वैल्यूज हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन पे देखे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गियर y वैल्यू क्या होती है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा w. द वर्किंग स्ट्रेस, नाउ working stress is the stress which will be acting while the two gears are in mesh, right? ना जब दो gear mesh में होंगे तो उस टाइम पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज योर वर्किंग स्ट्रेस, राइट? अब जैसे जैसे जब दो गियर्स मेश होते हैं, वी नो दैट इन मेशिंग गियर वी हैव सम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गियर्स, एंड जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर चेंज होती रहती है, राइट? समवेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, समवेयर द वेलोसिटी इज मिनिमम, एंड जो वर्किंग स्ट्रेस है वो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, दिस वर्किंग स्ट्रेस डिक्रीजेस, राइट? सो कैन आई से दैट सिग्मा w decreases as the pitch line velocity increases, right? That means sigma w can be found in terms of the pitch line velocities, right? Now we always find sigma w with respect to static stress है sigma 0. हम क्या कह रहे हैं? It is a static stress, or static stress, that is sigma 0, depends upon the material of the gear. It depends upon the material of gear, that is the stress at the elastic limit. सो अच्छा ये होगा कि हम सिग्मा w को सिग्मा 0 के टर्म में फाइंड आउट करें, राइट? एंड द रिलेशन ऑफ द वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा 0 एंड द स्टैटिक स्ट्रेस सिग्मा 0 इज सिग्मा w इज इक्वल टू स्टैटिक स्ट्रेस सिग्मा 0 इंटू CV. सिग्मा W equals to sigma 0 into CV, where sigma 0 क्या है? स्टैटिक स्ट्रेस.
and CV is a velocity factor. CV is a velocity factor which depends upon the velocity of the teeth, which depends upon the velocity of the teeth. Now CV की वैल्यू हर कंडीशन में अलग रहेगी. CV will be equal to 3/3 plus V, where V is linear velocity, right ना. CV will be equal to 3/3 plus V, where V is say linear velocity, right, and it will be equal to 3/3 plus V for ordinary cut gears, for ordinary cut gears. Okay, let me write out all the conditions. Okay, हमने लेविज इक्वेशन दिखा. लेविज इक्वेशन कहता है कि the bending strength is equal to sigma W into B into PC into Y, where sigma W is the working stress. Working stress is related with the static stress sigma 0 into the velocity factor CV, right ना. sigma W is equal to sigma 0 into CV, where CV क्या है, velocity factor. sigma 0 क्या है, static stress. sigma 0 किस पे डिपेंड होता है, मटेरियल के ऊपर, राइट ना. ओके, नाउ जो वेलोसिटी फैक्टर है, वेलोसिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ गियर एंड इट्स वेलोसिटी अप टू विच इट इज एक्टिंग. CV की वेलोसिटी 3/3 प्लस V है फॉर ऑर्डिनरी कट गियर्स एंड विच इज एक्टिंग up to 12.5 meter per second, up to a velocity of 12.5 meter per second. If the gear is cut carefully and is acting at 12.5 up to 12.5 मीटर पर सेकेंड, CV की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट ना. 4.5 प्लस ऑफ V. लेकिन अगर वही गियर बहुत एक्यूरेटली कट किया है और वो 20 मीटर पर सेकेंड तक एक्ट कर रहा है, तो CV की वेलोसिटी 6/6 प्लस V होगी. वही गियर अगर 20 मीटर पर सेकेंड तक एक्ट कर रहा है लेकिन प्रिसाइजली कट किया है, जैसे जैसे हम क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी एंड द रेंज up to which its velocity is increasing, the value of CV, that is velocity factor, is changing. So the velocity factor for non metallic gear, ये सब तो केसेस जब मेटालिक रहेंगे, जब कोई भी नॉन मेटालिक गियर रहेगा तो ऑलवेज द वेलोसिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 0.75/1 प्लस V प्लस ऑफ 0.25, राइट. तो हमने लेविस इक्वेशन देखा. लेविस इक्वेशन में जो वर्किंग स्ट्रेस है वो स्टैटिक स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और लेविस इक्वेशन में का जो वर्किंग स्ट्रेस है इट विल बी इक्वल टू स्टैटिक स्ट्रेस इनटू वेलोसिटी फैक्टर, जहां पर वेलोसिटी फैक्टर्स की वैल्यू या इन सब कंडीशंस में से निकाल सकते हैं हम. y की वैल्यू हमने पिछले थोड़ी देर पहले ही देखा कि बहुत सारे कंसेप्ट में y की वैल्यू लेविस फैक्टर या फिर उसे हम टूथ फैक्टर कह रहे हैं, वो भी कई केसेस में अलग अलग है. B is the width of the gear, PC is circular pitch, and sigma W is your working stress, right. So we will stop here and move to the next concept in the coming lectures.